वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रार और अब हम बात करते हैं नायका की। 2012 में शुरू हुई नायका ई कॉमर्स कंपनी है जो ब्यूटी, वेलनेस और फैशन प्रोडक्ट्स बेचते हैं। नतीजों की बात कर लेते हैं। सितंबर तिमाही में नतीजे एक्चुअली बहुत बढ़िया रहे। मुनाफा करीब 5 गुना बढ़कर 6 करोड़ आया, जबकि आय 40% बढ़कर 1230 करोड़ रही। मार्जिन में भी 52% की ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली है। तो नतीजों में को कहाँ से मिला सपोर्ट और कैसा है कंपनी का आगे ग्रोथ आउटलुक, इस पर चर्चा करने के लिए चलते हैं सीधे कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ फाल्गुनी नायर और को फाउंडर अद्वैता नायर हमारे साथ शो में जुड़ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फाल्गुनी, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी, जो नंबर्स आए हैं इस पर ऑफ कोर्स बिग कंग्रेचुलेशंस। सेकंड क्वार्टर बढ़िया दिख रहा है, डिमांड कैसी रही, ट्रेंड्स कैसे हैं अब, और क्या आपको लगता है ये कंटिन्यू रहेगी ये ग्रोथ मोमेंटम जो हमने अभी देखी है? आगे के बारे में तो ज्यादा बोल नहीं सकते, बट अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर तो जनरली सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है, क्योंकि दिवाली आती है। उसके बाद नवंबर में ई कॉमर्स कंपनी के सेल होते हैं ड्यूरिंग हमारा भी सेल है जो पिंक फ्राइडे, जो नवंबर में आता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ नवंबर। और उसके अलावा दिसंबर भी थोड़ा सा फेस्टिव कंटिन्यू करता है, तो अक्टूबर टू दिसंबर जनरली सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है। ओके, तो ये सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था, उसकी वजह से अच्छी ग्रोथ देखी गई ऑफ कोर्स दिवाली के पहले। अद्वैता, ग्रोथ जो फैशन बिजनेस पर हमने स्पेसिफिक देखा है, क्या ये आपके एक्सपेक्टेशंस मीट करता है? एंड फैशन सेगमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर कैसा दिख रहा है? When it comes to fashion, we're feeling very good about the trajectory of the fashion business. As you know, it's a new business. It's a business that we only started about 3 years ago or so. And this quarter, you see that the GMV of the fashion business has grown at almost 43-44%, taking the GMV for the quarter up to 600 crores or so. And this contributes about 26% of the overall company's consolidated GMV. So fashion is becoming very meaningful for us. There are a lot of interesting metrics that we've released this time for this quarter for the fashion business. You see an average order value, which has now crossed 4,400 rupees. It's, by far the highest average order value we've seen in 2 years or so. And it's much higher than, typically what e-commerce companies see. You're also seeing our initiatives like launching new brands from the global brands, Revolve partnership. So the fashion business is definitely operating from a place of strength. We continue to feel good about the trajectory of the fashion business. The market is so massive and it's still very, very early days for us as a market entrant. So we think most definitely there's a lot of room to grow from here. ऑलराइट अद्वैता, आपने कहा कि फैशन सेगमेंट और बिजनेस में ग्रोथ मोमेंटम है, तो व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट कि आपका ब्रेक इवन आ जाएगा इस पर्टिकुलर वर्टिकल में? अगेन दैट इज अ नंबर, जब ब्रेक इवन होगा ऐसे नंबर हम अभी नहीं बोल सकते हैं, बट व्हाट आई कैन से इज लाइक विद एवरीथिंग एट नायका वी हैव अ क्लियर पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी. We're only going to build businesses keeping in mind that we have profitability goals and targets. So we'd like to have a path to profitability and we have one in mind, but exactly the time frame is not something we can talk about. But what I will add, at least on the fashion side, from a profitability point of view, that the fashion business has been contribution margin positive for the last 1.5 years or so. That means on every order, fashion actually makes money. And what I can say is that even that contribution margin number has gone up this quarter. So it's gone up by 138 bips this quarter, year on year. So the business is getting more profitable as we speak. ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जानना चाहेंगे किस तरीके के प्लान्स हैं टू स्केल अप, टू एक्सपैंड। फिजिकल स्टोर साइड पर क्या आपके फोकस रहेगा, क्योंकि कुछ चेन्स आपने वहाँ पर ओपन अप किए हैं, कितना कैपेक्स आप लगाएंगे एंड फिजिकल एंड डिजिटल का क्या मिक्स रहेगा? We have done a considerable expansion of stores. So as of this quarter, our physical store count on the beauty side is about 122 stores. And on fashion also, we now have 2 stores. So again, we continue to be believers in the omni-channel model. हमें लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होने का जरूरत है. तो we will continue investing both in online and offline, not just in our beauty business, but also in our fashion business. वेल ऑफ कोर्स हमने डोमेस्टिक मार्केट की तो बात की, बट इंटरनेशनल बिजनेस कैसा इस वक्त दिख रहा है? वहाँ पर क्या प्लान्स हैं, क्या एक्सपैंड करेंगे, कौन से प्रोडक्ट्स पर आपका फोकस होगा? एग्जैक्टली इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर प्लान्स क्या है? Very early days international business. As you know, we've just recently announced the partnership with the apparel group. So the apparel group is a very strong player in the GCC.
And with them, we're teaming up to open stores and also operate, beauty website out of the Middle East and the GCC region in particular. So it's very early days, and again, can't comment exactly how much investment will be going in there, but we think it's a promising market, and we think it's strategically important for us to have one foot in that market. ओके ऑल राइट, इंटरनेशनल बिजनेस प्लान्स आर रोबस्ट, यहाँ पर आगे अच्छा फोकस है। और एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट की, फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर वहाँ पर क्या आउटलुक है, कैसा उम्मीद कर रहे हैं ये बिजनेस आगे पैन आउट करेगा, और मार्जिन इम्प्रूवमेंट आगे हमें दिख सकता है, वहाँ पर क्या फोकस होगा? So I think beauty and personal care has had a strong quarter where the GMV has grown 39% year on year. So for a business that is that large, it's a pretty significant growth rate that's been demonstrated. And so the beauty personal care GMV has now climbed to 630 crores in this past quarter. Similarly, in line with that, you see annual unique transacting consumers also growing 31%. So again, a very strong growth for the largest business in our portfolio. And the profitability, again, this business has shown very strong profitability improvement. So the contribution margin in beauty, which is a number that we do release as part of our earnings, has improved by 630 bips this year. So that business is definitely gaining in top line, but also you see improvements in profitability driven by better fulfillment costs, driven by better marketing costs. So many lines of the P&L are showing improvement on the profitability side. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, क्विक टेक देने के लिए आपके नंबर्स पर और आगे क्या है आउटलुक। तो ये थे नायका के टॉप मैनेजमेंट बातचीत करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर, बट आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी ऑन ज़ी बिज़नेस।